ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यस्य अद्वैतभूषणाख्यं व्याख्यानम् अस्माभिः इदानीं परामृश्यमानं वर्तते। तत्र प्राचीनमुद्रितपुस्तके 22 पुटं अस्माभिः इदानीं पठ्यते। तत्र यदुक्तं स्मरणाभिमानप्रमोषात् स्मरणस्य न गृह्यमाणात् स्वार्थविवेचकत्वम् इति तत्र वदामः इति एवं काचन पङ्क्तयः इतः प्राक् पठिताः, तथापि पुनः स्मरणार्थम् अत्रैव आरम्भः क्रियते। प्राभाकरमते इदं रजतम् इति भ्रमः न स्वीक्रियते। इदं रजतम् इति व्यवहारः अस्ति, परन्तु इदं रजतमिति एकं ज्ञानं न भवति भ्रमात्मकं, किन्तु इदमिति रजतमिति च ज्ञानद्वयम्। इदमिति प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं, रजतमिति स्मरणात्मकं ज्ञानं, परन्तु स्मरणमिति अयं न जानाति। अयमेव स्मरणाभिमानस्य प्रमोषः इति उच्यते। स्मरणाभिमानस्य प्रमोषात् इदं ज्ञानस्य रजतज्ञानस्य च भेदः न गृहीतः इति कृत्वा एकं ज्ञानम् इति व्यवहारः, इदं रजतम् इति शब्दप्रयोगः इति आख्यातिवादिनां मतम्। तत्र स्मरणाभिमानप्रमोषो नाम कः इति विकल्प्य तन्न संभवति, स्मरणाभिमानप्रमोषः न संभवति इति खण्डनं क्रियते ग्रन्थकारैः। यदुक्तं स्मरणाभिमानप्रमोषात् स्मरणस्य न गृह्यमाणात् स्वार्थविवेचकत्वम् इति तत्र वदामः। किं स्मार्यगतो धर्मः स्मरणाभिमानः तद्देश तत्काल पूर्वानुभव संभिन्नत्वं वा उत स्मरणगतः कश्चित् धर्मः स्मरामीत्यनुव्यवसायो वा। अत्र प्रथमतः स्मार्यो यः विषयः, स्मार्यः नाम स्मरणस्य यो विषयः, तद्गतः कश्चित् धर्मः स्मरणाभिमानः इति वक्तुम् इष्टं वा, उत स्मार्ये तस्मिन्नेव तद्देश तत्काल पूर्वानुभव संबद्धत्वम् इदमपि विषयगतम्। यदिदं दृश्यते पुरतः वस्तु, इदं प्राक् कदाचित् दृष्टं, देशान्तरे कालान्तरे दृष्टमिति अनुभवविषयतया तत् प्रतीयते। तथा च तद्देश तत्काल पूर्वानुभव संभिन्नत्वं संबद्धत्वम् इदमपि स्मार्य विषयगत स्मरणविषयगतो धर्मः। उत स्मरणगतः कश्चित् धर्मः, स्मरणे एव कश्चन विशेषो वा, अथवा स्मरामीत्यनुव्यवसायो वा। न आद्यः प्रत्यभिज्ञाभ्रमस्थले तद्देश तत्कालादि संभेद अवभासेपि गृह्यमाणात् स्वार्थविवेचकत्व आदर्शनात्। इदं रजतम् इति अभिज्ञाभ्रमः, सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञाभ्रमः। अन्यत्र दृष्टः कश्चित् अन्यः, इदानीं दृश्यमानः अन्यः, परन्तु अस्य भ्रमो जातः सोऽयम् इति। अयं प्रत्यभिज्ञाभ्रमः इति उच्यते। प्रत्यभिज्ञाभ्रमस्थलेपि अख्यातिवादिनां मते ज्ञानद्वयं स्वीकार्यं। सः इति एकं ज्ञानम्, अयमिति एकं ज्ञानम्। अत्र सः इति तद्देश तत्कालादि सम्बन्धः अवभासते। अर्थात् स्मरणाभिमानः तद्देश तत्काल पूर्वानुभव संभिन्नत्वं यदस्ति तदत्र भासते इति कृत्वा तत्र स्मरणाभिमानः अस्ति, तस्य प्रमोषो न जातः। परन्तु स्मरणाभिमानप्रमोषः न जातश्चेत् स एव स्मरणाभिमानः अयम् इति गृह्यमाणात् स्वार्थं विविच्य प्रदर्शयेत् चेत् सोऽयं देवदत्तः इति भ्रमः न स्यात्। एवञ्च तद्देश तत्कालादि संभेदावभासः स्मरणाभिमानः, स एव स्मरणाभिमानः अनुभूयमानात् स्वविषयं
पृथक्कृत्य प्रदर्शयति, विविच्य प्रदर्शयति, प्रकृतस्थले इदं रचितम् इत्यस्मिन् स्थले स्मरणाभिमानो नास्ति, सः प्रमुष्टः, अतएव विषययोर्विवेचनं न जातम् इति त्वया वक्तुं न शक्यम्। यतः तद्देश तत्कालादिसम्भेदावभासरूपस्य स्मरणाभिमानस्य स्वार्थविवेचकत्वात् सम्भवात्। किञ्च अत्र मम एवं भातं स्मार्यगतो धर्मस्मरणाभिमानः इति एकं। तच्च किं स्मार्यगतो धर्मः कः, किं रूपः इत्युक्ते तद्देश तत्काल पूर्वानुभव संभिन्नत्वम् इति तस्यैव इदं विवरणम्। उत इति यद् वर्तते तत्तु स्मरणगतं। स्मरणविषयगतो धर्मः स्मरणाभिमानः, स्मरणगतः धर्मः स्मरणाभिमानः इति द्वेधा विकल्पः अस्ति। इदानीं स्मरणविषयगतो धर्मः इति स्वीकृत्य तत्र खण्डनं क्रियते। किञ्च अनुभवसम्भिन्नस्य पूर्वानुभव अविषयत्वे स्मृतिविषयत्व अनुपपत्तिः। स्मृतेः मूलभूतः यः अनुभवः तत्र यो विषयः स एव स्मृतेर्विषयो भवति। अनुभवस्य केवलं घटादिर्विषयः न तु अनुभवसहितघटादिर्विषयः। तथा चेत् तादृश अनुभवजन्यस्मृतौ अपि केवलघटः एव विषयः भवेत्, अनुभवसम्भिन्नः कथं विषयो भवेत्। तथा च अनुभवसम्भिन्नत्वस्य पूर्वानुभव अविषयत्वे स्मृतिविषयत्वानुपपत्तिः। एवञ्च स्मृतौ अनुभवसम्भिन्नत्वं विषये न भासितुं शक्नोति। अनुभवसम्भिन्नत्वं पूर्वानुभवेपि विषयः इति उच्यते चेत् तदानीं स्मृतौ अपि विषयो भवेत्, परन्तु पूर्वानुभवे दोषः आगच्छति। पूर्वानुभवविषयत्वे स्वस्यैव स्वविषयत्वापत्तौ कर्तृकर्मविरोधापत्तेः। सः अनुभवः स्वयमेव स्वस्य विषयः इति वक्तव्यं स्यात्, तदा एव तादृश अनुभवविषयतया विषयस्य ग्रहणम् अनुभवे भवेत्। स च विरोधः, कर्तृकर्मविरोधः विरोधात् नाङ्गीक्रियते। तस्मान्न स्मृतेः स्वजनक अनुभवसम्भिन्नविषयत्वसम्भवः। स्वजनकः यः अनुभवः तादृश अनुभवसम्बद्धतया विषयग्राहकत्वं न सम्भवति। अतः न स्मार्यगतो धर्मः स्मरणाभिमानः। अस्तु, स्मार्यगतः इत्यत्रैव पुनः कश्चन धर्मः स्वीकृतः। नापि त्रिकोणादिवत् स्वगतो धर्म न स्मार्यगतो धर्मः गतः, त्रिकोणादिवत् स्वगतो धर्मः, ज्ञानस्य स्वगतो धर्मः, ज्ञानगतः धर्मः। कश्चित् स्मरणाभिमानः अनुभूयते ज्ञानस्य नित्यानुमेयत्वात्, तद्विशेषस्य अनुभवायोगात् इति भवितव्यम् इति चिन्तयामि। नित्यानुमेय तद्विशेषस्य इति अस्ति खलु, अनुभवायोगात् इति अस्ति। एतत्तु भाट्टमते अस्ति, ज्ञानं नित्यानुमेयं, तर्हि तद्विशेषः प्रत्यक्षसिद्धम् इति कथं वक्तुं शक्यते? ज्ञानस्य नित्यानुमेयत्वे तद्विशेषोऽपि नित्यानुमेय एव भवेत्, न तु प्रत्यक्षसिद्धः। अतः ज्ञाने त्रिकोणादिवत् पुरतः वस्तुनि यथा त्रिकोणादिकं प्रत्यक्षं भासते, तद्वत् ज्ञाने स्मरणाभिमानो नाम कश्चित् धर्मः अनुभूयते इति वक्तुं न शक्यते इति। अस्तु, अनुमानेन सः विशेषः अवगम्यतां, प्रत्यक्षेण नानुभूयतां ज्ञाने विशेषः, परन्तु ज्ञानं येन अनुभूयते, अनुमीयते लिङ्गेन, अनुमितिरपि अनुभवः इत्येव उच्यते, प्रत्यक्षानुभवः न परोक्षानुभवः। तत्र विशेषः अनुभूयते, अनुमित्या अनुभूयते इति भवतु इति अग्रे शङ्का। न च धूमविशेषाद् वह्निविशेषानुमानवत् लिङ्गविशेषाद् ज्ञानविशेषानुभवसम्भवः। सामान्यतः धूमात् वह्निसिद्धिः भवति, परन्तु सुगन्धिधूमः वर्तते, चन्दनगन्धः तत्र अनुभूयते चेत् तर्हि चन्दनकाष्ठे ज्वलन् वह्निः, चन्दनवह्निः अनुमातुं शक्यते। एवमेव दुर्गन्धयुक्तधूमः आगच्छति चेत् तदनुसारेण वह्निः अनुमातुं शक्यते। एवञ्च धूमविशेषाद् वह्निविशेषानुमानं यथा भवति तद्वत्
लिङ्गविशेषात् ज्ञानविशेषानुभवसम्भवः। ईदृशं लिङ्गम् अनुमापकम् अस्ति चेत् तत् अनुभवात्मकम् ईदृशं ज्ञानं ज्ञाने विशेषः अनुमीयते इति वक्तुं शक्यते खलु इति शङ्का। तदा उच्यते स्मृत्यनुभवयोः ग्राह्यरूपलिङ्गस्य एकत्वेन विशेषाभावात्। इदानीं स्मरणस्य वा अनुभवस्य वा ज्ञानरूपत्वात् तस्य ज्ञानस्य अनुमेयत्वस्वीकारे अनुमापकं लिङ्गं किं भवेत् इत्युक्ते ज्ञानविषयः यः अस्ति तदेव लिङ्गम् इति वक्तव्यम्। तर्हि ग्राह्यं नाम विषयः, अनुभवस्य यो विषयः स एव स्मरणस्य विषयो भवति। अननुभूतं न स्मर्तुं शक्यते। अतः अनुभवस्य यो विषयः साक्षात् स एव स्मृतेरपि विषयो भवति। तर्हि विषयेण चेत् ज्ञानम् अनुमीयते, तर्हि विषयः एव लिङ्गं स्यात्। ग्राह्यरूपं लिङ्गं, ग्राह्यो नाम विषयः, अनुभवस्य विषयः, स्मरणस्य विषयः, तद् एकं भवति उभयत्र इति कृत्वा अनेन अनुभवः अनुमीयते, अनेन स्मरणात्मकं ज्ञानम् अनुमीयते इति विशेषः कथयितुं न शक्यते। लिङ्गे विशेषाभावः न च फलरूपलिङ्गविशेषात् तद्विशेषानुमानम्। अहम् उदाहरणेन प्रदर्शयामि। प्रत्यक्षेण वह्निं पश्यति, अनुमानेन वह्निं जानाति पर्वते। प्रत्यक्षेण दृष्टः यः वह्निः स एव अनुमानेनापि विषयीक्रियते इति वक्तव्यं। तस्मिन् पर्वते वह्निरस्ति इति अनुमानेन ज्ञातं चेत् वह्निद्वयमस्ति, प्रत्यक्षवह्निः एकः, अनुमेयवह्निरेकः इति वक्तुं न शक्यते खलु। एक एव विषयः तत्र प्रमाणद्वयेन ज्ञातः इति वक्तव्यं स्यात्। तथा च स्मृत्यनुभवयोः विषयः एकः, तत्र भेदो नास्ति। तर्हि तेन कथं तज्जनकज्ञाने विशेषः अनुमातुं शक्यते? न शक्यते। ज्ञानगतो विशेषः इदं स्मरणम्, इदम् अयम् अनुभवः इति अनुमानेन वक्तुं सामग्री नास्ति इति उच्यते। न च फलरूपलिङ्गविशेषात् तद्विशेषानुमानं। वह्निः स एव, परन्तु प्रत्यक्षेण दृश्यमानः वह्निः इत्यत्र प्रत्यक्षप्रमाणस्य फलं भिन्नम्, अनुमीयते यत्र वह्निः तत्र अनुमानप्रमाणस्य फलं भिन्नं। वह्निः एकः परन्तु फलं भिन्नं। तेन फलभेदात् तज्जनकज्ञाने विशेषः अनुमातुं शक्यता खलु इति अग्रे शङ्का। न च फलरूपलिङ्गविशेषात् तद्विशेषानुमानं स्मृत्यनुभवयोः ग्राह्यभेदाभावेन फलभेदाभावात्। विषयः एव खलु स्मृतेः अनुभवस्य च विषयः। अन्यत्र अनुमिति प्रत्यक्षस्थले फलभेदः वक्तुं शक्येत, परन्तु स्मरण तज्जनक अनुभवयोस्तु फलभेदः अपि वक्तुं न शक्यते। उभयोरपि समानविषयकत्वम् आवश्यकम्। फलभेदः उच्यते चेत् तर्हि फलं भिन्नमिति कृत्वैव फलविशिष्टरूपेण विषयः भिन्नो भवेत्, परन्तु अत्र तथा नास्ति। स्मृत्यनुभवयोः ग्राह्यभेदाभावेन फलभेदाभावात्। किञ्च स्मरणे एव कश्चन त्रिकोणादिवत् आकारः धर्मः स्वगतो धर्मः अनुभूयते इति वक्तुं न शक्यते। यतः शबरस्वामिना उक्तम् अत एव अनाकारामेव बुद्धिम् अनुमीमहे इति शबरस्वामिना उक्तम्। ज्ञानस्य आकारः कोऽपि नास्ति। ज्ञाने यः विषयः तस्य भवति आकारः त्रिकोणादिः। एवञ्च अनाकारामेव बुद्धिम् अनुमीमहे इति भाष्यात् बुद्धेर्धर्मः कोऽपि अनुमीयते विशेषः इति वक्तुम् अवकाशो नास्ति। अनन्तरं स्मरामीत्यनुव्यवसायः एव स्मरणाभिमानः इति अन्तिमः पक्षः। तस्यापि खण्डनं क्रियते। नापि स्मरामीत्यनुभवः स्मरणाभिमानः तस्य कादाचित्कत्वेन सर्वस्मरणसाधारण्याभावात्। यदा यदा स्मरणं भवति तदा तदा स्मरामि इति एकः अनुव्यवसायः भवति इति निर्बन्धो नास्ति। एवञ्च
स्मरामीत्यनुव्यवसायमात्रम् एकम् उच्यते चेत् तत् कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। स्मरणे सत्यपि कदाचित् भवति, स्मरणे सत्यपि कदाचित् न भवत्यपि। अतः तम् आदाय अनुव्यवसायमादाय स्मृतेः अनुभवस्य च विशेषः इति वक्तुं न शक्यते। अनुभव, अनुभवितृ, अनुभाव्य, व्यावृत्त, स्मृति, स्मर्तृ, स्मार्य, वाच्य, वाचक शब्दानुविद्धतया तादृश शब्द स्मरण हेतुत्वेन प्रागेव भेदावगमस्य विवेचकस्य भावाच्च इति स्यात्। विवेचकत्वाच्च इति वा स्यात्। विवेचकत्वा भावाच्च इति वर्तते। भेदावगमस्य विवेचकस्य भावाच्च इति पाठः सम्भाव्यते। अत्र एवमस्ति, स्मरामीत्यनुभवः अनुव्यवसायः उच्यते चेत् विवेचकः, विषयविवेचकः, तदा अनुभवामीति अनुभवस्थले अनुव्यवसायो भवति। अहं घटम् अनुभवामि, अत्र अनुभवः उल्लिख्यते, अहम् इति अनुभवितुः उल्लेखः, घटम् इति अनुभाव्यस्य उल्लेखः। यदा तस्यैव घटस्य स्मरणं भवति तदा अहं घटं स्मरामि इति उल्लेखो भवति। तत्रापि स्मृतिः भाति, स्मरामि, अहम् इति स्मर्ता, घटम् इति स्मार्यः एवं भाति। एवञ्च वाच्य वाचक शब्दानुविद्धतया स्मरणहेतुः तादृशशब्दस्मरणहेतुत्वेन तर्हि पूर्वापेक्षया भिन्नतया वर्तते। अहं घटम् अनुभवामि इत्यपेक्षया अहं घटं स्मरामि इति अनुव्यवसायः यः अस्ति तत्र तु विवेचकः वर्तते। अयं विवेचको वर्तते चेत् प्रागेव भेदावगमस्य विवेचकत्वाच्च। भेदावगमः प्रागेव वर्तते। अनुभवस्य विषयः अयम् अहम् अनुभवामि इति प्रतीयते, स्मरणस्य विषयः अयम् अत एव स्मरामि इति प्रतीयते। शब्दोल्लेखवशादेव प्राग्भेदावगमो वर्तते इति ज्ञायते। तस्मात् स्वरूपतो विषयतश्च स्मृत्यनुभवयोर्विशेषाभावात्, भवदुक्तरीत्या कोऽपि विशेषः स्मृत्यनुभवयोः वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा कः भेदः तर्हि स्मृत्यनुभवयोः इत्युक्ते संस्कारमात्रजन्यत्वात् तदभावाभ्यामेव भेदः वक्तव्यः स्मृत्यनुभवयोः। स्मृतिः संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानम्, अनुभवस्तु तथा न। एवञ्च ज्ञानस्य स्वगतः विशेषः इत्युक्ते स्मरणे संस्कारमात्रजन्यत्वं धर्मः वर्तते, अनुभवे तु तदभावः वर्तते इत्येव विशेषो वक्तव्यः। प्रकृते च न च प्रकृते तत्सम्भवति। इदानीम् इदं रजतम् इति ज्ञाने रजतज्ञानं संस्कारमात्रजन्यम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। दोषादेः कारणान्तरस्य भावात्। दोषादिकं विना इदं रजतम् इति भवति वा कस्यापि? न भवति। अतः संस्कारमात्रमस्ति इति कृत्वा इदं रजतम् इति ज्ञानं नोत्पद्यते। तस्मात् संस्कारात् भिन्नस्यापि दोषादेः कारणान्तरस्य सद्भावावश्यकत्वात् संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति संस्कारमात्रजन्यत्वं यो धर्मः स्मृतिगतः सः इदं रजतम् इत्यत्र रजतज्ञाने नास्ति। तद्वशात् अत्र एवं भेदो न गृहीतः इति वक्तुम् अवकाशो नास्ति। अतः न आख्यातिः सम्भवति। एवञ्च आख्यातिवादिनां प्रक्रिया न सम्भवति, सा न स्वीकर्तुं योग्या। अस्तु, तर्हि अन्यथाख्यातिः। इदानीम् अन्ये मीमांसकाः तार्किकाश्च आगच्छन्ति, ते अन्यथाख्यातिं भ्रमस्थले वर्णयन्ति। तथा हि इन्द्रियसन्निकृष्टं सितभास्वरद्रव्यं दोषात् शुक्तित्वेन अगृहीतं सादृश्य समुद्बुद्ध संस्कारोपस्थित देशान्तरीय रजतात्मना गृह्यते इति तेषां पक्षः। इन्द्रियेण सन्निकर्षो जातः। चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः पुरोवर्ति
शुक्तिद्रव्येण जातः अस्ति, परन्तु तत् शुक्तिद्रव्यम् इदानीं चक्षुषा कथं गृह्यते? सितभास्वररूपेण गृह्यते। श्वेतरूपेण अस्ति, एवं भास्वररूपं तत्र अस्ति, पळपळ इति वर्तते, परन्तु शुक्तिः इति न गृह्यते। किमर्थं न गृह्यते? दोषात् शुक्तित्वेन अगृहीतं, शुक्तित्वं तु न गृहीतम्। इदानीं गृह्यमाणं रूपं तु रजतस्य सदृशं वर्तते, तर्हि रजतस्य संस्कारः उद्बुद्धः एतद्दर्शनेन। सदृशदर्शनात् सदृशान्तरसंस्कारस्य उद्बोधो भवति इति अस्ति। एवञ्च सादृश्य समुद्बुद्ध संस्कारोपस्थित देशान्तरीय रजतात्मा। इदानीं कस्य रजतस्य स्मरणं जातम्? इतः प्राक् तेन अनुभूतस्य रजतस्य स्मरणम् इति वक्तव्यम्। तर्हि इदानीं यद् रजतं स्मरणेन उपस्थापितं तद् रजतात्मना पुरोवर्ति द्रव्यं दोषात् गृह्यते इति सः भ्रमः इति अन्यथा ख्यातिवादिनः वदन्ति। परन्तु अत्र भासमानं रजतं स्मरणविषयीभूतं देशान्तरीयं रजतं, न तु तत्रैव उत्पद्यमानम् अनिर्वचनीयं रजतम् इति तेषाम् आशयः। तत्र वक्तव्यं सिद्धान्ती इदमपि मतं खण्डयति। अन्यथा ख्यातिः इति उच्यते खलु। ख्यातिः नाम ज्ञानं, तत्र अन्यथात्वं नाम किम् इति प्रथमतः विकल्पं कृत्वा खण्डनं क्रियते। किम् अन्याकारं ज्ञानम् अन्यालम्बनम् इति ज्ञानान्यथात्वम् उच्यते। ज्ञाने अन्यथात्वम् उच्यते वा, विषये अन्यथात्वम् उच्यते वा, स्फुरणे अन्यथात्वम् उच्यते वा इति त्रेधा विकल्पः कृतः। ज्ञानस्य आकारस्तु इदं रजतम् इति वर्तते। रजतम् इति आकारः अस्ति, परन्तु रजतं न विषयः, शुक्तिका विषयः इति उच्यते वा? अत एव अन्यथात्वं ज्ञानस्य, ज्ञानान्यथात्वम् अन्याकारं ज्ञानं, रजताकारं ज्ञानं जातं, परन्तु विषयः रजतं न शुक्तिः। अन्यालम्बनम्, आलम्बनं नाम विषयः, आकारं नाम तद् भासते तत् अज्ञानस्य इति उच्यते वा? उत वस्तुनो वस्त्वन्तरात्मना अवभास इति स्फुरणान्यथात्वम्। ज्ञाने मया किमपि नोच्यते, परन्तु वस्तुनः यः अवभासः तस्मिन् अवभासे अन्यथात्वम् उच्यते। अवभासे अन्यथात्वं नाम किम्? नाम वस्तु अन्यद् वस्तु अन्यवस्त्वात्मना भासते। अयमेव अवभासे स्फुरणे अन्यथात्वं नाम। इदमेव अन्यथात्वं स्फुरणस्य। तृतीयं वस्तुन एव अन्यथात्वं। किं वा अन्यथा परिणते वस्तुनि ज्ञानम् इति वस्तु अन्यथात्वं। त्रेधा विकल्पस्य अयमाशयः। ज्ञानं, प्रतिभासः, वस्तु इति त्रयमत्र वर्तते। ज्ञानं तु अहं जानामि इत्येवं सकर्मकतया अनुभूयते, ज्ञातृकर्तृकतया, देवदत्तादिकर्तृकतया। वस्तु विषयः प्रतिभासते इति उच्यते। अयं प्रतिभासः विषयकर्तृकः अकर्मकतया भासते। प्रतिभासते इत्यत्र अहं कर्ता न भवामि, विषयः कर्ता। एवञ्च तदेव स्फुरणम् इति उच्यते। अनन्तरं विषयः एकः। इदानीं ज्ञाने अन्यथात्वम् उच्यते वा अन्यथा ख्यातिरिति, उत स्फुरणात्मकप्रतिभासे अन्यथात्वम् उच्यते वा, अथवा विषयभूते वस्तुन्येव अन्यथात्वम् उच्यते वा इति त्रेधा विकल्पः कृतः। न आद्यः संविद्विरोधात्। किं भाति? किं ज्ञानं जातं? रजतज्ञानं जातम् इति वदति। रजतज्ञानं जातं, परन्तु रजतविषयकं न, शुक्तिविषयकम् इति कथं वक्तुं शक्यते? संविद्विरोधात्। जातं ज्ञानं तु रजतविषयकमेव, यथाकारं चेत् रजतविषयकमेव। यदाकारं यज्ञानं तत् तदालम्बनम् इति अन्यत्र दृष्टत्वेन रजतज्ञानस्य शुक्त्यालम्बनत्वविरोधः। रजतज्ञानं परन्तु शुक्तिर्विषयः इति वक्तुं न शक्यते। शुक्तिर्न विषयः, रजतमेव विषयः रजतज्ञानस्य। अस्तु, तदालम्बनत्वं नाम तदाकारत्वम् इति न, किन्तु तज्जन्यप्रवृत्तिविषयत्वम् इति अस्तु। ज्ञानं किं जातम्? इदं रजतम् इत्याकारकं ज्ञानं जातम्। इतः परं रजतार्थी कुत्र प्रवृत्तः? शुक्तौ प्रवृत्तः, न तु रजते। तथा च अन्यविषयकं ज्ञानम् अन्यत्र प्रवृत्तिजनकम् इति कृत्वा
अन्यालम्बनम् इति मया उच्यते। इदमेव अन्यथात्वं ज्ञानस्य इति अस्तु इति अग्रे शङ्का तत् खण्ड्यते। न च तज्जन्यप्रवृत्तिविषयत्वात् तदालम्बनत्वम्। इदं रजतम् इति ज्ञानजन्यप्रवृत्तिविषयत्वं शुक्तौ वर्तते। तस्मात् इदं रजतम् इत्याकारकं ज्ञानं शुक्त्यालम्बनं ज्ञानम्। अतएव अन्याकारं ज्ञानम् अन्यालम्बनम् इति कृत्वा ज्ञानस्य अन्यथात्वम् इति समन्वयः कर्तुं शक्यते इति शङ्का। समाधानमुच्यते तथा न। सर्पादिज्ञानात् दण्डादिषु आदीयमानेषु तदालम्बनत्व प्रसङ्गः। पुरतः अयं सर्पः इति ज्ञानं जातं, ततः परं तस्य अपसारणार्थं दण्डादि उद्यमने प्रवृत्तिर्जायते, दण्डाद्यादाने प्रवृत्तिर्जायते। एवञ्च सर्पज्ञानजन्यप्रवृत्तिविषयत्वं दण्डे वर्तते। तर्हि सर्पज्ञानस्य दण्डः आलम्बनम् इति वक्तुं शक्यते वा? नैव शक्यते। अतः तज्ज्ञानजन्यप्रवृत्तिविषयत्वं तदालम्बनत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। नापि तज्जनित अतिशयाधारत्वं। ज्ञानेन यः अतिशयः जायते सः यस्मिन् जायते तदेव तस्य आलम्बनम्। इदानीं ज्ञानेन अतिशयः पुरोवर्तिनि आहितः, स च पुरोवर्ती शुक्तिः इति कृत्वा शुक्तिरेव आलम्बनम् इति उच्यते इति चेत् न, तदपि न। प्रद्धस्तादेः अनालम्बनत्वप्रसङ्गात् अतीतविषयकमपि ज्ञानं भवितुमर्हति। तत्र तु विषयः इदानीम् अतीतः नाम प्रद्धस्तः नाम अतीतः इदानीं नास्ति। तत्र ज्ञानेन किं कर्तुं शक्यते? किं कः अतिशयः आधातुं शक्यते? न कोऽपि अतिशयः भवेत्। न द्वितीयः। द्वितीयः इत्युक्ते प्रतिभासे अन्यथात्वम्। वस्तुनः वस्त्वन्तरात्मतायाः असत्त्वेन अपरोक्षप्रथानुपपत्तेः। इदं रजतम् इति अपरोक्षतया भाति भ्रमस्थले, परन्तु पुरोवर्ती वस्तु शुक्तिः, सा शुक्तिः रजतात्मिका तु नास्ति। एवञ्च शुक्तेः रजतात्मता नास्त्येव। यन्नास्ति, रजतात्मता यदि नास्ति तर्हि कथम् अपरोक्षतया रजतात्मतया प्रतीतिः भवितुमर्हति? प्रतिभासः कथं भवितुमर्हति? अपरोक्षप्रथा अनुपपत्तेः। अपरोक्षतया रजताकारेण प्रतिभासः न भवितुमर्हति। अतः प्रतिभासे अन्यथात्वं वक्तुं न शक्यते। प्रतिभासे एव अनुपपन्नः, तत्र कारणं नास्ति इति उच्यते। अस्तु, वस्तु भेदाभेदाङ्गीकारे सर्वत्र सामान्यविशेषयोस्तादात्म्यमस्ति इति चेत् तदुपरि शङ्कावाक्यम्। एवं नास्ति। अस्माभिः भेदो अङ्गीक्रियते, तर्हि सामान्यविशेषयोः भेदाभेदरूपं तादात्म्यम् अस्ति। इदम् इति सामान्यं शुक्तिः, इदमिति सामान्यरूपेण भासते, रजतमिति विशेषः, उभयोः तादात्म्यं भेदाभेदसहितम् अस्ति इति चेन्न। उभयमपि अस्ति चेत् तर्हि भ्रान्तिबाधव्यवस्थानुपपत्तेः। अत्र प्रथमतः इदं रजतम् इति ज्ञानानन्तरं पश्चात् इदं न रजतम् इति रजतभेदज्ञानं जायते। पुरोवर्तिनि रजत अभेदोऽपि वर्तते, रजतभेदोऽपि वर्तते इति अङ्गीकारे इदं रजतम् इति ज्ञानमपि यथार्थं स्यात्, रजत अभेदो वर्तते इति। नेदं रजतम् इति ज्ञानमपि यथार्थमेव स्यात्, रजतभेदो वर्तते इति कृत्वा तर्हि किं कस्य बाधकं स्यात्? अतः अनयोर्मध्ये एकं भ्रमात्मकम् अपरं तद्बाधात्मकम् इति व्यवस्था न सिद्ध्येत्। न तृतीयः। वस्तुन एव अन्यथा परिणामः इति तृतीयः पक्षः आसीत्। तत्र उच्यते न तृतीयः। यदि दोषवशात् शुक्तिरेव रजताकारेण परिणता तर्हि भ्रान्तिबाधयोरनुपपत्तिः। तत्रापि भ्रान्तिबाध अनुपपत्तिरेव। यतः शुक्तिः रजताकारेण परिणता किल, तर्हि रजतरूपेण यदा भासते तदा शुक्तिः रजतरूपेण वर्तते, तर्हि इयं न भ्रान्तिः। इतः परं नेदं रजतम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते, यतः रजतं रजतरूपेण परिणामो जातः इति। न हि क्षीरे दध्याकारेण परिणते नेदं दधि इति बाधः भवति, न हि भवति। दधि क्षीरं दधिरूपेण इदानीं परिणतमस्ति, इदानीं दधि इति दृश्यते, इदं न दधि इति बाधो भवति वा? न भवति। नापि इदं दधीति भ्रान्तिः इति पदं त्रुटितम् इति अहं चिन्तयामि।
भ्रान्तिबाधयोरनुपपत्तिः इति उक्तं किल। पूर्वं बाधस्य अनुपपत्तिः प्रदर्शिता, नापि इदं दधीति भ्रान्त्युपपत्तिः। इदं भ्रान्तिरेव न, दधि एव खलु इदानीं। दधिरूपेण यदा क्षीरं परिणतं तदा इदं दधीति समीचीनमेव ज्ञानं, न तु भ्रमात्मकं ज्ञानम्। अतः भ्रान्ति अनुपपत्तिः इति उच्यते। तत्र एकं किञ्चित् पदं नष्टं योजनीयमस्ति। अपि च अन्योपि दोषः, परिणामेव क्षीरं दधिरूपेण यथा परिणतं तद्वत् सुक्तिः रजतरूपेण परिणता चेत् रजतमेव यावदायुः अवतिष्ठेत, न शुक्तिः। इतः परं रजतरूपेण परिणामो जातः खलु, पश्चात् झटिति पुनः शुक्तिरूपेण कथं परिणामः। अतः रजतरूपेणैव सर्वस्यापि तिष्ठेत् पुरोवर्ति द्रव्यम्। ननु एतावता अन्यथा ख्यातिखण्डनं जातम्। एतन्मध्ये विज्ञानवादिनः प्रवेशः क्रियते। ननु ज्ञानस्यैव रजताकारः बहिरवभासते, संप्रयोगज ज्ञानाविषयत्वे सति अपरोक्षत्वात् संविद्वत्। विज्ञानवादी किं वदति, बाह्यं वस्तु किमपि नास्ति, सर्वं विज्ञानमेव विषयः, सर्वं साकारं विज्ञानमेव तथा तथा व्यवह्रियते। एवञ्च रजतम् इति प्रतीतिरपि समीचीना। तत्र ज्ञाने रजताकारोऽस्ति, ज्ञानस्यैव सः रजताकारः भासते, किन्तु कथं भासते, बहिरवभासते। ज्ञानस्य आकारः बहिर्वत् अवभासते, बहिरस्ति इदं रजतमिति, ज्ञानं रजतमिति न भासते, किन्तु ज्ञानाद्भिन्नं विषयः पुरोवर्ति बहिः अस्ति इत्येवम् अवभासते। परन्तु एवम् अवभासमानः सः रजताकारः ज्ञानस्यैव इति अस्माभिः अनुमानेन साध्यते। अयं भासमानः भ्रमस्थले रजताकारः ज्ञानगतः न तु विषयगतः इति इदानीं साध्यते। हेतुः कः, संप्रयोगजज्ञाना विषयत्वे सति अपरोक्षत्वात् इति हेतुः। संप्रयोगः सन्निकर्षः, तत्र पूर्वं रजतं नास्ति इति जानन्ति सर्वेपि स्वीकुर्वन्ति, अतः तेन सह इन्द्रियसन्निकर्षः भवितुं नार्हति। अतः रजतज्ञानम् इन्द्रियसम्प्रयोगजन्यं न भवति। तर्हि रजतमपि संप्रयोगजन्यज्ञानविषयो न भवति। तथा च संप्रयोगजज्ञानाविषयत्वे सति सत्यन्तं तस्मिन् आगतम्, अपरोक्षत्वं च वर्तते। अनेन हेतुना रजताकारस्य भासमानस्य ज्ञानगतत्वम् अनुमीयते। दृष्टान्तः कः, संविद्वत्। संवित् प्राभाकरमते स्वप्रकाशः इति कृत्वा संप्रयोगजज्ञान अविषयः भवति। संवित् ज्ञानान्तरेण न ज्ञायते, स्वयमेव ज्ञायते। अतः संप्रयोगजज्ञानाविषयत्वमस्ति, अपरोक्षत्वमस्ति। एवञ्च संवितः आकारः संविद्गतः एव भासते, तद्वदेव रजताकारोऽपि ज्ञानगतः भासते इति अनेन अनुमानेन साध्यते। स च आकारः, तर्हि ज्ञाने ईदृशः आकारः कथमागतः, अकस्मात् तत्र कारणं वक्तव्यं किल इत्युक्ते सूच्यते। स च ज्ञानस्य आकारः स्वसन्तानपतितरजतज्ञानान्तररूपसंस्कारात्। इदानीमेव इदं रजतम् इति ज्ञानं जातम्, इतः प्राक्तनं ज्ञानं तु अन्यदेव किमपि ज्ञानं, परन्तु एतद् ज्ञानसन्ततौ कदाचित् रजतज्ञानमपि एकं जातमस्ति। तज्जन्यसंस्कारः यः अस्ति, तादृशसंस्कारवशात् इदानीम् इदं रजतम् इति विज्ञानस्य रजताकारो जातः। स च विसदृश अनेकज्ञानव्यवहितोऽपि। नाम इदानीं रजतज्ञानं भ्रमात्मकं यत् जातं तद् अव्यवहितपूर्वं रजतज्ञानमेव आसीत् इति वक्तुं न शक्यते। कदा अस्य रजतज्ञानं जातं, बहुकालव्यवधानेन बहुकालात् प्रागपि जातं स्यात्, चिन्ता नास्ति, कारणत्वेन तत् स्वीकर्तुं शक्यते। व्यवहितमपि किञ्चित् कारणं भवितुम् अर्हति इत्यत्र दृष्टान्तः उच्यते। शालिबीजमिव काण्डादि व्यवहितं बीजान्तरस्य। अत्र किम् अपि अपेक्षितं, अंकुरकाण्डादि व्यवहितं बीजान्तरस्य इति भवितव्यं। किमपि पितृ इति अस्ति, तत्र कश्चन अन्यः पाठः सम्भाव्यते।
शालिबीजं यदस्ति तद् बीजम् अस्माभिः भूमौ उप्यते तर्हि झटिति तस्मात् बीजमेव उत्पद्यते वा? नैव उत्पद्यते। तत्र प्रथमतः अङ्कुरः उत्पद्यते, ततः परं सः वर्धते, सः परिणतो भवति, तत्र पुनः फलम् उत्पद्यते, तत् पक्वं यदा भवति तदा पुनः बीजान्तरं ततः लभ्यते। तर्हि बहु व्यवहितं भवति कार्यम्। उक्तस्य बीजस्य कार्यं पुनः बीजान्तरं भवति, परन्तु तद्बीजान्तरं तु बहुकालव्यवधानेन जायते। बहवः एतन्मध्ये परिणामपरम्पराः सन्ति, तथापि कारणत्वम् अङ्गीक्रियते। एवमेव इदानीम् इदं रजतम् इति विज्ञानस्य यः आकारो जातः, तस्मिन् आकारे अस्यामेव सन्ततौ बहुकालव्यवधानेन पूर्वं रजताकारज्ञानम् आसीत्, तज्जन्यसंस्कारः कारणमिति वयं स्वीकुर्मः। तस्य च विज्ञानाकारस्य बहिष्ट्वमात्रं रजतमिदं न इति बाध्यते इति तदंशे भ्रमः। इदानीं किं बाध्यते? विज्ञानाकारः ज्ञाने वर्तते, तत्तु समीचीनमेव। रजतज्ञानमेव अस्य जातम् इत्यत्र विरोधो नास्ति, परन्तु यद् रजतं भासते तद् विज्ञानाकारमिति न भासते, किन्तु तस्य इदन्त्वं भासते, पुरोवर्तित्वं भासते इति कृत्वा तदंशे भ्रमः। रजतम् इदन्न इति बाध्यते, इदं रजतं न इति न बाधः, रजतम् इदन्न इति एतेषां मते बाधः भवति। अतः तदंशे भ्रमः। तत्र इदं वक्तव्यं, विज्ञानाकारो रजतं किं जायते न वा इति। विज्ञानं जायते, विज्ञानाकारः रजतमिति त्वया उच्यते, तर्हि इदं रजतं जायते वा न वा? न चेत् न जायते इति उच्यते चेत् जायमानज्ञानाकारो न स्यात्, विरोधात् ज्ञानं तु जायते। तर्हि आकारो न जायते चेत् अजायमानः सः रजताकारः कथं ज्ञानस्य स्यात्? जायमानस्य ज्ञानस्य अजायमानः आकारः कथं भवितुमर्हति? विरोधः इति। जायते चेत् तदपि ज्ञानेन सह जायते रजताकारः इति चेत् न अर्थात् ज्ञानव्यतिरिक्त न अर्थात्, तदा जायते चेत् तस्य कारणं किं? किम् अर्थात् जायते, अर्थात् न जायते, नाम विषयात्। अर्थो नाम विषयः, विषयात् एतादृश आकारः ज्ञानस्य जातः इति वक्तुं न शक्यते। ज्ञानव्यतिरिक्त अर्थाभावात् विज्ञानवादिमते विज्ञानमेव अस्ति, तद्व्यतिरिक्तः अर्थः नास्त्येव। अतः अर्थात् कारणात् ज्ञाने रजताकारः उत्पन्नः इति वक्तुं न शक्यते। ज्ञानात् चेत् यस्मात् ज्ञानाद् उत्पद्यते तस्य विषयः उत अन्यस्य। ज्ञानादेव ज्ञानस्य रजताकारो जातः इति चेत् कारणीभूतं यद् ज्ञानमस्ति तस्मात् तस्य ज्ञानस्य अयं विषयः रजतं विषयो भवति वा उत अन्यस्य ज्ञानस्य विषयो भवति वा? तस्य चेत् पूर्वापरकालत्वेन अपरोक्षतया विषयभावानुपपत्तेः। यदि कारणीभूतस्य ज्ञानस्य रजतं विषयः, तर्हि इदानीं कारणीभूतज्ञानं तु बहुकालात् पूर्वमासीत्, तर्हि इदानीं विद्यमानतया अस्य ज्ञानस्य रजतं विषयो न स्यात्। अन्यस्य इति स्वीक्रियते चेत् तत्र अपरोक्षतया, पूर्वस्मिन् पक्षे अपरोक्षतया विषयभावानुपपत्तेः इति उक्तम्। अन्यस्य इत्यत्रापि किं दुष्टकारणजन्यस्य ज्ञानस्य विषयः उत अदुष्टकारणजन्यस्य? रजतम् उत्पन्नं ज्ञानात् जातः, परन्तु इदं रजतं कस्य ज्ञानस्य विषयः इत्युक्ते दुष्टकारणजन्यस्य ज्ञानान्तरस्य विषयः इति वा उत अदुष्टकारणजन्यस्य ज्ञानान्तरस्य विषयो वा? न अन्त्यः भ्रान्तित्वाभावप्रसङ्गात्। अदुष्टकारणजन्यस्य ज्ञानस्य रजतं विषयः इति अन्त्यः पक्षः। तथा उच्यते चेत् रजतं समीचीनज्ञानस्य विषयः इति स्यात्। यतः दुष्टकारणजन्यं ज्ञानमेव भ्रमः, अदुष्टकारणजन्यं ज्ञानं तु प्रमा। एवञ्च इदं रजतम् इति ज्ञानं प्रमा स्यात्, तदा एव रजतं प्रमाज्ञानस्य विषयः, अदुष्टकारणजन्यज्ञानस्य विषयः इति तदा एव वक्तुं शक्यते। आद्येपि स्वविषयज्ञानं प्रति जनकत्वे अर्थक्रियाकारित्वात् सत्त्वप्रसङ्गात् दुष्टकारणजन्यस्य विषयः इति उच्यते चेत् अस्मिन्नपि पक्षे
स्वविषयक ज्ञानं प्रति अस्य रजतस्य जनकत्वं यदि स्वीक्रियते तदा अर्थक्रियाकारित्वात् रजतस्य सत्वं स्यात्। तव तु मते बाह्यं रजतं बाह्यं यदस्ति तद् असत् इति। ज्ञानाकारमेव सत्, बहिस्तु विद्यमानम् असत्। एवञ्च असतः असत्वं न स्यात्। अर्थक्रियाकारित्वमेव सत्वमिति कृत्वा यदि बाह्यस्य अर्थक्रियाकारित्वं नाम किञ्चित् कार्यं प्रति कारणत्वम् आगतं चेत् असत्वम् अपगच्छति। सत्वप्रसङ्गः अजनकत्वे प्रत्यक्षविषय भावानुपपत्तेः। तथा च तत् असत् नैव जनकम् इति उच्यते चेत् तस्य प्रत्यक्षविषयत्वमपि न स्यात्। तस्मात् शुक्तौ रजतमिति ज्ञानं न अन्यथा ख्यातिः नापि आत्मख्यातिः। एवञ्च अन्यथा ख्यातिरपि इदं ज्ञानं न वक्तुं शक्यते। अन्य आत्मख्यातिः इति बौद्धमतमपि अस्मिन् स्थले न स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च पक्षद्वयमपि खण्ड्यते। अत्र मया इदानीं किञ्चित् द्राविडभाषया प्रागुक्तो विषयः निरूप्यते। अत्र एवम् आगतम्, ओहो तमिळ्ல சொல்றேன். அக்யாதி மதத்தை கண்டனம் பண்ணார். அக்யாதி மதம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா, பிராபாகரன் சொல்லக்கூடியது அக்யாதி. இதம் ரஜதம் அப்படின்னு சுத்தியை பார்த்து இவன் ஏமாந்து போறானோ இல்லையோ, அப்ப அந்த இடத்துல இவனுக்கு பிராந்தின்னு ஒரு ஞானம் வருது இல்லையா, அந்த ஞானத்தை பிரமேன்னு சொல்றோமோ, அவன் பிரமேன்னு ஒரு ஞானமே கிடையாது, எல்லாம் யதார்த்த ஞானம்னு சொல்லணும். இதம் ரஜதம்னு தெரியுது, இது எப்படி யதார்த்தம்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டா, இது ஒரு ஞானமே இல்லை, இது ரெண்டு ஞானம்னு சொல்லலாம். இது அப்படின்னு தெரியறதோ இல்லையோ, அது இதுதானே, இதுன்னு தெரிஞ்சது இது சரிதானே, இதுதான், அதனால அது யதார்த்தம். ரஜதம்ங்கிறது இவனுக்கு ஏற்கனவே அனுபவிச்ச ரஜதத்துக்கு ஸ்மரணமா, அதுவும் சரிதான். ஏற்கனவே அனுபவிச்ச ரஜதம் ஞாபகத்துக்கு வந்ததுன்னா அதுல என்ன தப்பு இருக்கு? அதனால அதுவும் யதார்த்தம், இதுவும் யதார்த்தம். ஆக அயதார்த்தமான ஞானம்னு ஒண்ணு கிடையாது. அப்ப இவன் ஏன் அதை இதை எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற வஸ்துவா இதம் ரஜதம்னு சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ஆளுக்கு புரியல. இவன் ரஜதத்தை நினைச்சுட்டு இருக்கான், அதான் ரஜத ஸ்மரணம் இவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு, இதம்ங்கிறது அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த அனுபவத்துக்கும் அந்த ஸ்மரணத்துக்கும் ஒரு விவேகம் இல்லாத போயிடுச்சு. அதனால இவன் இது ரஜதம்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். பல ஞானங்கள் விவேகம் இல்லாம குழம்பி போச்சுன்னா நாம பேசுறதே வித்தியாசமா தான் இருக்கும். அதனால இவனுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதம் ரஜதம்ங்கிற ஸ்மரணம் வேற வந்துருக்கு, இல்ல தத் ரஜதம், ரஜதம்னு ஒரு ஸ்மரணம் வேற வந்திருக்கு, இதம்ங்கிற அனுபவம் சேர்ந்து வந்துருக்கு, இது ரெண்டுலயும் விவேகம் இல்ல, ஆக இதுவே ரஜதம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆக சொன்னதுதான் தப்பா போச்சே தவிர ஞானத்துல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை ஆக்கியாதிவாதி சொன்னான். அதை கண்டிச்சுண்டு வரச்சே, ஸ்மரணம் தன்னை தானே அனுபவத்திலேருந்து பிரிச்சு காமிச்சுக்குமே, அது ஏன் காமிக்கல, அது ரஜதம், ஞாபகம் வருது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவோமோ, ஞாபகம் வரச்சே அது ஞாபகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அனுபவத்தை காட்டிலும் ஸ்மரணம் தன்னை தானே பிரிச்சு காமிச்சுக்கும். ஏன் அதை பண்ணலைன்னு சொன்னா, அதான் ஸ்மரணாபிமான பிரமோஷகான்னு சொன்னான். இது ஸ்மரணங்கிறது தெரியாது போயிடுச்சு. அந்த ஸ்மரணாபிமானங்கிற ஏதோ ஒரு அம்சம் இங்கே காணாம போனதுனாலே அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்க முடியாது போயிடுச்சு. அதனால இதம் ரஜதம் சொன்னான். அப்ப இவர் பிடிச்சார், ஸ்மரணாபிமான பிரமோஷங்கிறையே, இது ஸ்மரணாபிமானம்னு நீ என்ன நினைச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னா என்ன, அது அதாவது அந்த ஸ்மரண விஷயமான வஸ்துடைய தர்மமா அல்லது அந்த ஸ்மரணத்தினுடைய தர்மமா, இன்னொன்னு மூணாவது என்ன, இல்ல ஸ்மராமீதி அனுவிவசாயோவா அப்படின்னு 3 விகல்பம் பண்ணினார். அதெல்லாம் ஒன்றும் சரியா வராது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, ஸ்மரியமானம்னு சொன்னா நாம ஸ்மரிக்கக்கூடிய விஷயம், அந்த விஷயத்துல ஸ்மரணாபிமானம்ங்கிற ஒரு தர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது என்னது, தத்தேச கால பூர்வானுபவ சம்பின்னத்துவம். அது ஏற்கனவே பார்த்தேனே, அந்த தேசத்துல இருந்தது, அந்த காலத்துல இருந்தது, ஏற்கனவே பார்த்தேனே, என்னுடைய அனுபவத்துக்கு அது விஷயமாயிருக்கே அப்படின்லாம் தெரியறது இல்லையா. அப்ப அந்த தேசம் அந்த காலத்தோடு சம்பந்தம், எனக்கு வந்த பூர்வானுபவ சம்பந்தம், இதெல்லாம் தான் அந்த விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய தர்மம். அது ஸ்மரணத்துல ஸ்மரணாபிமானம்னு சொல்லப்படும். இதெல்லாம் இப்ப தெரியாத போயிடுத்து, அதனாலதான் ஸ்மரணாபிமானத்துக்கு ப்ரமோஷன் சொல்றேன்னு முதல் இது. அவர் சொன்னார், இப்படி சொல்லக்கூடாது, இது அனுபவத்தை காட்டிலும் தன்னை பிரிச்சு காமிச்சுக்க கூடியதாக இருக்கும் பட்சத்துல விஷயத்துல உள்ள இந்த விசேஷம்
ஸ்மரணாபிமான பிரமோஷம், அதனாலதான் விசேஷம் தெரியாது போச்சு அப்படின்னு நீ சொன்னால், பிரத்யபிஜா பிரமம்னு ஒண்ணு வருமே, அங்க நீ என்ன பண்ணுவ? பிரத்யபிஜா பிரமம் அப்படின்னு சொன்னா, இவன் ஏற்கனவே யாரையோ பார்த்துருக்கான், இப்போ எதிர்த்தா போல நிற்கிறது வேற இன்னொருத்தான். ஆனா இவனுக்கு ஒரு பிரமை, சோயம் தேவதத்தகா, இவனை தானே நான் அந்த ஊர்ல அங்க பார்த்தேனே அப்படின்னு ஒரு தப்பான பிராந்தி வரும். இப்ப என்ன பண்ணுவ? அந்த தேசத்துல வந்ததாக, பார்த்ததாக, அந்த காலத்துல பார்த்ததாக அந்த வஸ்துவை தெரியுது. அப்ப ஸ்மரணாபிமானம் இங்க இருக்கு. நீ சொன்ன ஸ்மரணாபிமானம் இங்க இருக்கு. இந்த ஸ்மரணாபிமானம் அயம்னு அனுபவத்தை காட்டிலும் தன்னை பிரிச்சு காண்பிக்குமோ இல்லையோ? ஏன்னா நீ தானே சொன்ன ஸ்மரணாபிமானங்கிறத அதை பிரிச்சு காண்பிச்சுடணும். அது பிரமோஷமானதுனாலதான் இங்க பிரிச்சு பார்க்க முடியலன்னு சொன்னீங்க. இப்பதான் நன்னாவே தெரியுது. அப்ப இங்க எப்படி பிராந்தி விட முடியும்? ஸ்மரணாபிமானம் இருந்தும் இந்த இடத்துல ஏமாந்து போயிருக்காங்க சோயம் தேவதத்தகா அப்படின்னு சொல்லி. வேற யாரையோ பார்த்து சோயம் தேவதத்தகான்னு பிரமிக்கிற இடத்துல ஸ்மரணாபிமானங்கள்லாம், நீ சொல்ற ஸ்மரணாபிமானங்கள்லாம் கரெக்டா இருக்கு, ஆனால் அது ப்ரமோஷன் ஆகல, ஆனா விவேச்சனம் பண்ணலையே, இதை வச்சுட்டு நீ எப்படி பிரிச்சு காமிக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியும்? அப்ப இது இல்லாட்டா பிரிச்சு காமிக்க முடியலன்னு சொல்றதும் தப்பு. எது இருந்தால் ஒரு காரியம் நடக்குமோ அந்த காரியம் இல்லாத போகிறதுக்கு அதனுடைய அபாவத்தை நம்ம காண்பிக்கணும். நெருப்பு இருந்தா சுடும். இப்ப ஏன் சுடலைன்னு கேட்டா நெருப்பு இல்லை, அதனாலதான் சுடல வெந்நீர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஸ்மரணாபிமானம் இல்லாததுனாலதான் இங்க இவனுக்கு விவேகம் ஏற்படலே அப்படின்னு சொல்லணும்னா, ஸ்மரணாபிமானம் இருந்தால் விவேகம் வரணும்னு சொல்லணுமோ இல்லையா? இங்க என்ன விவேகம் வந்தது? வரவே இல்லையே. இங்க ஸ்மரணாபிமானம் இருக்கு பிரதிபிஜாபிரம ஸ்தலத்துல, அங்க ஒண்ணும் விஷயத்துல விவேகம் ஏற்படவே முடியல. அப்ப ஸ்மரணாபிமானம் விஷயத்தை விவேச்சனம் பண்ணக்கூடியதாக இல்லை. அப்படி இருக்கிறச்ச ஸ்மரணாபிமானம் போனதுனாலதான் இங்க விவேச்சனம் பண்ண முடியலேன்னு நீ சொல்றது தப்பு அப்படின்னு இதை கண்டிச்சார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார்? ரெண்டாவது பட்சத்துக்கு கொண்டு விட்டார். ரெண்டாவது பட்சம்னா, அந்த விஷயத்திலே ஏதோ ஒரு தர்மம் இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்தா அந்த தியானமே ஏதோ ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும். ஸ்மரணத்துக்கும் அனுபவத்துக்கும் பார்த்தா அது ஏதோ முக்கோணமா இருக்கும், இது சதுஷ்கோணமா இருக்கும். இப்படி ஏதாவது இந்த மாதிரி அந்த தியானத்திலே ஏதாவது ஒரு விசேஷம் இருக்கும் அப்படி சொன்னா, இல்லப்பா சபரசுவாமி தியான அனுமேயம்னு சொல்லியிருக்கார். தியானத்தை பிரத்யட்சமா பார்க்க முடியாது, அது அனுமேயம். அது அனுமேயம்னு சொல்லிட்டா அதுல உள்ள இந்த தர்மத்தை மாத்திரம் நம்ம பிரத்யட்சமா பார்க்க முடியாது இல்லையா? தியானமே அனுமேயம்னு சொல்லிட்டா அது சதுரமா இருக்கா, திரிகோணமா இருக்கா, தட்டையா இருக்கா, நெட்டையா இருக்கா, அது எப்படி சொல்ல முடியும்? அது மாத்திரம் பிரத்யட்சம் என்னமா சொல்ல முடியும்? அதனால அப்படி சொல்றதுக்கு வழி இல்லை அப்படின்னு சொன்னான். அப்ப சொன்னா தியான அனுமேயமா வச்சுப்போம் சபரசுவாமி சொன்ன மாதிரி. ஆனா அனுமேயத்திலையும் லிங்க விசேஷத்தை, அந்த எதை வச்சு அனுமானம் பண்றோமோ அந்த ஹேதுல உள்ள விசேஷத்தை வச்சுட்டு விசேஷத்தை அனுமானம் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு உதாரணத்துக்கு, பொதுவா புகையை வச்சு நெருப்பை கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா அந்த புகை வாசனையான புகையா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், ஊதுபத்தியிலேருந்து புகை வருதோ இல்லையோ, அந்த புகையில ஒரு வாசனை தெரியுது. அந்த வாசனையை வச்சுட்டு இது எந்த ஊதுபத்தி எரியறது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுறோம் இல்லையா? அப்போ சந்தன பத்தி அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறோமோ, சந்தன வன்னியை கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த புகையுடைய வாசனையை வச்சு. அத மாதிரி லிங்க விசேஷத்தை வச்சுண்டு தூம விசேஷத்தை வச்சுண்டு வன்னி விசேஷத்தை அனுமானம் பண்ற மாதிரி இந்த ஞானம் அனுமேயமாவே இருந்தாலும் கூட ஸ்மரணத்திலேருந்து வரக்கூடிய காரியம் வித்தியாசமா இருக்கு. அனுபவத்திலேருந்து வரக்கூடிய அனுபவத்தை அனுமாபகமாக அதை அனுமதிக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய லிங்கம் வேறையா இருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கு. ஆக இந்த லிங்க பேதத்தை வச்சுட்டு ஸ்மரணத்துக்கும் அனுபவத்துக்கும் அனுமேயமான விசேஷம் இருக்கட்டுமே, அந்த விசேஷத்தை நம்ம அனுமானத்தால தெரிஞ்சுக்கலாமேன்னு அடுத்த கேள்வி வருது. அதுக்கு சொன்னா, இந்த இடத்துல மற்ற இடத்துல சொல்லலாம், ஆனா இங்க சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அனுபவத்துக்கு எது விஷயமோ அதுவேதான் ஸ்மரணத்துக்கு விஷயமா. ஏன்னா ஸ்மரணங்கிறது அனுபவத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடியதுதான். அனுபவத்துக்கு விஷயம் ஆகாதது ஸ்மரணத்துக்கு விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப அனுபவத்துல உள்ளதுதான் எது விஷயமோ அதுதான் இதுக்கு விஷயம்னு சொன்னா அந்த விஷயத்துல என்ன வித்தியாசத்தை நீங்க பார்க்க முடியும்? இந்த மாதிரி இருந்தா அது ஞானம் ஸ்மரணம், இந்த மாதிரி இருந்தா அனுபவம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு லிங்கம்னா அனுமாபகமான அந்த ஹேத்துவில வித்தியாசம் காண்பிக்க முடியாது. ஏன்னா மற்ற இடத்துல காமிக்கலாம், ஆனா அனுபவ ஸ்மரண ஸ்தலத்துல விஷயத்துல ஒரு வித்தியாசத்தை உங்களால காண்பிக்க முடியாது. அனுபவத்துக்கு எது விஷயமோ அதேதான் ஸ்மரணத்துக்கு விஷயமாக இருந்தாக வரும். சரி, விஷயம் ஒன்னா இருக்கட்டும், ஆனா விஷயத்துல வரக்கூடிய பலம் வித்தியாசமா இருக்கலாமேன்னு அதுக்கு எடுத்தது கேட்டான். பலம்னா என்னன்னு சொன்னா ஞாதத்தான்னு சொல்லுவாங்க. அனுபவம் வரைச்சே அது பிரத்யட்சமா பாக்குறச்சே அந்த ஞாதத்தா வேறையாம், பரோட்சமா தெரியறச்சு ஞாதத்தா வேற.
பாரோக்ஷம்னு சொல்றது. அதே மாதிரி ஸ்மரணமா வரைச்ச அந்த ஞாத்ததா வேற. ஆக இந்த ஞாத்ததாங்கிற பலபேதத்தை வச்சுட்டு பேசலாமேனா, விஷயம் ஒன்னா இருக்கிறச்ச இந்த ஞாத்ததாவை வச்சுன்னு நீ என்னப்பா பண்ண போற, விஷயம் அதே தானே, இதை வச்சுட்டு பலபேதத்தையும் சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் அனாகாராமேவ புத்திம் அனுமிமீமஹே அப்படின்னு சபரசுவாமி சொல்லிட்டார். அவர் அந்த அனுமேயமான ஞானத்துல ஒரு வித்தியாசத்தையும் உன்னால பார்க்க முடியாது, அனுமானம் கூட பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாம இந்த வாக்கியத்துல. ஆக இந்த பட்சம் போச்சு. அப்போ ஸ்மராமி, நான் இப்ப நினைச்சு பார்க்கறேங்க ஒரு நமக்கு மனசுல தோன்றதும் இல்லையா, அனுவிவசாயம் வருதும் இல்லையா, இதுதான் இதை வச்சு ஞானத்துல உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கலாமே, இதுதான் ஸ்மரணாபிமானம்னு மூணாவது பட்சம். அதை சொன்னா நான் அனுபவிக்கிறேன், ஸ்மரிக்கிறேன், இதெல்லாம் சரிதான், இதை வச்சுட்டு வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் இந்த அனுபவம் ஒவ்வொரு ஞானத்துக்கும் வரும் சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு ஸ்மரணத்துக்கும் நம்ம தாரையா ஒரு விஷயத்த ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே வரோம். ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு வரைச்ச இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு அடுத்து இதுக்கு அடுத்துன்னு வரிசையா ஸ்மரணம் வரணுமே தவிர ஒவ்வொரு ஸ்மரணத்துக்கும் நடுப்புற நான் ஸ்மராமி, இதை ஸ்மரிக்கிறேன், அதை ஸ்மரிக்கிறேன் அந்த விச்சேதம் வந்துடும். அப்போ பேச முடியாது. அதனால ஸ்மரணம் வரைச்ச அந்த ஸ்மரணம் மாத்திரம் வரணுமே தவிர ஸ்மராமி ஸ்மராமி ஸ்மராமின்னு அனுவிவசாயம் நடுப்புன்னு வரக்கூடாது. தாரையா வர வேண்டிய இடத்துல இதெல்லாம் வராது. அந்த அப்போ அனுபவாமி ஸ்மராமிங்கிற அனுவிவசாயங்கள்லாம் வராத இடத்துல என்ன பண்ணுவேன்? அங்க எப்படி உனக்கு வித்தியாசம் தெரியும்? இது ஸ்மரணமா இல்ல அனுபவமா அப்படிங்கிறது உனக்கு வித்தியாசம் தெரியாத போயிருப்பீங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, ஸ்மராமி அனுபவாமின்னு சொல்ற இடத்துல எல்லாம் மூணு அம்சம் தெரியுது. ஒண்ணு அனுபவம், அடுத்தது அந்த அனுபவம் யாருக்கு வந்திருக்கோ அந்த ஆத்மா, எந்த விஷயத்தை பத்தின அனுபவம் அந்த விஷயம், மூணும் தெரியுதா இல்லையா? அகம் இதம் அனுபவாமின்னு இப்படியே தானே ஸ்மரணத்திலையும் தெரியுது. நான் ஸ்மரிக்கிறேன்னா அதே ஆள் தானே, இது ஸ்மரிக்கிறவன் வேற ஆள் இல்லை, அதே விஷயம்தான். அப்ப எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறச்ச இதை போய் நீ என்ன எப்படி விவேச்சகம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறா. ஆனால் ஸ்மராமின்னு அபுனருக்தமான ஒரு சப்தம் பேசுறான், அனுபவாமின்னு அங்க சொல்றான், ஸ்மராமின்னு இங்க சொல்றான் அனுபவசாரத்துல. அப்படி சொல்லும் போது அத அனுபவாமிங்கிற இடத்துல ஸ்மராமின்னு சொல்றது கிடையாது, ஸ்மராமிங்கிற இடத்துல அனுபவாமின்னு சொல்றது கிடையாது. இப்படியாக அபுனருக்தமான சப்த பிரயோகத்துக்கு காரணமா இருக்கிறதுனாலே இந்த இடத்துல விவேச்சனம் வரத்தான் வரும். அப்படி இருக்கிறச்ச நீ இந்த ரஜதாதி இதம் ரஜதம்ங்கிற இடத்துல அகம் ரஜதம் ஸ்மராமின்னு ஏன் வரல அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது உனக்கு. அப்படி தஸ்மாத் ஸ்மிருதிக்கும் அனுபவத்துக்கும் நம்ம கிரகிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ஸ்மிருதிங்கிறது வெறும் சம்ஸ்கார மாத்திரத்தினால உண்டானதுன்னு சொல்லணும். அனுபவங்கிறது அப்படி இல்லை, அதுக்கு வேற இன்னொரு காரணங்களும் உண்டு, இதுதான் வித்தியாசம்னு சொல்லணும். அப்படி சொன்னால் இதம் ரஜதம்ங்கிற பிரமஸ்தலத்துல நீ இந்த வித்தியாசத்தை காமிக்க முடியாது ரஜத ஜானத்துல. ஏன்னா இங்க ரஜதம் வரத்துக்கு, ரஜதம் தெரியறதுக்கு காரணமாக சம்ஸ்காரத்தை தவிர்த்து தோஷாதிகள் கூட இருக்கு. ஏன்னா தோஷம் இல்லாதவனுக்கு அந்த இடத்துல வரமாட்டேங்கிறதே இதம் ரஜதம்னு. ஆகையாலே வெறும் சம்ஸ்கார மாத்திரத்தினால வந்ததாக இந்த ஞானத்தை சொல்றதுக்கு இல்லை. ஆக வித்தியாசம் காமிக்கிறதுக்கு முடியாது போகும் அப்படி. ஆகையாலே அக்யாதிவாதம் சரியா இல்லை. ஸ்மரணாபிமானம்னு அவ எதை சொல்றாளோ, ஸ்மரணாபிமான பிரமோஷம்னு சொல்லி நிர்வாகம் பண்ற இடத்துல ஸ்மரணாபிமானத்தையே நிரூபணம் பண்ண முடியாத விஷயமா இருக்கிறதுனாலே அந்த அக்யாதிமதம் சரியில்லை என்ற. அதுக்கப்புறம் அந்நிதாக்கியாதிவாதி வந்தான். அவன் என்ன சொல்றான்னா, அந்நிதாக்கியாத்தின்னு சொல்றது கரெக்டா இருக்கும், அக்யாத்தியை விட்டுவிடலாம். அதான் இவன் பார்க்கறது எதை பார்க்கறான்னா எழுத்தா போல இருக்கிற வஸ்துவை பார்க்கறான். இந்திரிய சன்னிகர்ஷம் எழுத்தா போல இருக்கும் வஸ்துவோட தான். ஆனா அது எப்படி இருக்கு, அது கொஞ்சம் பளபளன்னு இருக்கு, வெளுப்பா இருக்கு. இது சதிருஷமாக இருக்கு ரஜதத்துக்கு. இவங்கிட்ட தோஷம் வேற இருக்கு, அதனால அது எழுத்தா போல இருக்கிற வஸ்துடைய சுக்தித்துவங்கிற விசேஷம் கிரகிக்கப்படாது போச்சு. இப்ப சதிருஷமான ஒரு வஸ்துவை பார்த்தோம்னா சதிருஷமான இன்னொரு வஸ்து ஞாபகத்துக்கு வந்து அப்படி நமக்கு பழக்கம். சதிஷாதிருஷ்ட சிந்தாத்தியாக ஸ்மிருதி பீஜஸ்ய போதக்காக அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆக அவனை போல ஒருத்தனை பார்த்தேன்னா இவனை இன்னொருத்தன் ஞாபகம் வந்துடுவான், இதே மாதிரி தானே அவன் இருப்பான். அதாவது அந்த சம்ஸ்காரத்துக்கு உத்போதகமாயிடும். இப்ப ரஜதம் போல இது பளபளன்னு தெரிகிறதுங்கிறதுனால ரஜத சம்ஸ்கார உத்போதமாகி அவனுக்கு ஒரு ரஜதம் ஞாபகத்துக்கு வந்துடுது. அந்த ரஜதம் இந்த ரஜதம் ஏதோ எப்பவோ பார்த்த ரஜதம் தேசாந்தரிய ரஜதம். ஆனால் தோஷவசாத் இவன் என்ன சொல்றான்னா, இதுவரையில் பிரபாகர மதத்திலையும் சமானம் தான், ஆனா இது மேல்தான் வித்தியாசம்.
தோஷம் இருக்கிறதுனாலே அந்த எப்பவோ ஏற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரஜதமாக இந்த புரோவர்த்தி விஷயம் இருக்கு, இது தெரியுது. தேசாந்தரிய ரஜதாத்மனா இந்திரிய சன்னிகிருஷ்டம் வஸ்து கிரஹியதே. இந்த புரோவர்த்தியான வஸ்து எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டா, அங்க ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துக்கு வந்த அந்த ரஜதம் இருக்கே, அந்த ரஜத ரஜதமாக தெரியுது. அதான் பிராந்தி. இதை சொன்னா இது அந்நியதா கியாத்தின்னு பேர் வச்சிருக்கியே, இந்த அந்நியதாத்வங்கிறது ஞானத்துல வரக்கூடிய அந்நியதாத்வமா, இல்ல வஸ்துவுடைய பிரதிபாசத்துல வரக்கூடிய அந்நியதாத்வமா, இல்ல வஸ்துவிலேயே அந்நியதாத்வம் ஒரு மாறுதல் இருக்குங்கிறியா? ஞானத்துல அந்நியதாத்வம்னா என்ன? தெரியறது வேற, ஆகாரம் வேற ஆகாரமா தெரியுது, ஆனா விஷயம் வேற அப்படிங்கிறதுனால ஞானம் அந்நியதான்னு சொல்றியா? அல்லது வஸ்துவே வேற வஸ்து, ஒரு வஸ்து இருக்கிற வஸ்து வேற வஸ்து, இருக்கிற வஸ்து ஒண்ணு, ஆனா தெரிகிற வஸ்து வேற, அதனால வஸ்து அந்நியதாத்மாக பிரதிபாசம் ஏற்படுறது அப்படின்னு சொல்றியா? இல்ல வஸ்துவே மாறி போயிடுச்சு, பரிணாமத்தை அடைஞ்சிருத்து, வேற ஒரு வஸ்து இன்னொரு வஸ்துவாக அங்க மாறுதலை அடைஞ்சிருத்து, அதான் அந்நியதாத்வம் அப்படின்னு சொல்றியா? விகல்பம் பண்ணாங்க. மூணுமே சரியா இல்லை. முதல்ல ஞானத்துல வித்தியாசம் வர்றது அப்படின்னு சொன்னா முடியாது. எப்படி தெரிகிறது? ரஜதம்னு தானே தெரிகிறது. ஞானம் இப்படி ரஜதம் ஜானாமி அப்படித்தானே சொல்றான். இவனுக்கு என்ன ஞானம் வந்தது? ரஜ ஞானம் வந்தது. ஆனா இதுக்கு விஷயம் என்னதுன்னு கேட்டா, ரஜதம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? சுக்தி விஷயம்னு சொல்ல முடியாது. அந்நியாகாரம் ஞானம், அந்நியாலம்பனம் கிடையாது. இந்த மாதிரி வர முடியாது, சொல்லவே முடியாது. அப்ப என்ன சொன்னா, ஆலம்பனங்கிற சப்தத்துக்கு விஷயம்னு அர்த்தம் இல்லை, அதனுடைய அர்த்தம் வேற. என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, இந்த ஒரு ஞானத்தினால எதுல பிரவருத்தி ஏற்படுறதோ அத ஞானத்துக்கு ஆலம்பனம்னு சொல்லுவோம். இவனுக்கு ஞானத்துக்கு விஷயம் என்னமோ ரஜதம் தான், ரஜதமா தான் தெரியுது. ஆனா இந்த ரஜத ஞானத்துக்கு அப்புறம் அவன் எடுக்க போனானே, இங்க போனா புரோவர்த்தியில போனான், சுக்தியை போய் எடுத்துன்னு வரான். அப்பனா என்னாச்சு? ரஜத ஞானம், ஆனா அதுக்கு விஷயம் என்ன ஆச்சு? விஷயம் என்ன? ஆலம்பனம் எதுன்னு சொன்னா சுக்தியா போயிடுது. போனது அதைத்தானே, அங்க போயிட்டான். அதுதான் அந்நியாகாரம் ஞானம், அந்நியாலம்பனம்னு சொல்லலாமே. இது ஒரு லட்சணம் இல்லப்பா ஆலம்பனங்கிறதுக்கு அப்படி சொன்னா, சர்ப்பத்தை பார்த்தான், டக்குன்னு பக்கத்துல இருக்கிற கம்பு எடுக்கிறான், தண்டாதிகளை எடுக்கிறான். இப்ப என்ன சர்ப்ப ஜானம்? கம்பு எடுத்தது எது? கம்பு எடுக்கிறான். அப்படின்னா சர்ப்ப ஜானத்துக்கு கம்பு தான் ஆலம்பனம் சொல்றியா? தண்ட ஆலம்பனம் சொல்ல முடியுமா? இந்த லட்சணம் சரியா இல்லை. சரி, இந்த ஞானத்தினால ஏதோ ஒரு அதிசயம் உண்டாகிறது, எதுல அதிசயம் உண்டாகிறதோ அதுதான் ஆலம்பனம் சொல்லலாமே. அதிசயம் எல்லா இடத்துலயும் உண்டாக்க முடியாது ஞானத்தினால. அங்க தற்காலத்துல இருந்ததுன்னா உண்டாக்கலாம், அதீத விஷய ஞானங்கள்லாம் வரும். அப்ப இந்த ஞானம் அந்த அதீத விஷயத்துல என்ன அதிசயத்தை உண்டாக்க முடியும்? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதனால இது சரியா இல்லை. சரி, அந்த பிரதிபாசத்துல வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த வஸ்து எது தெரியுறது? ரஜதம் தெரியுறதுங்கிறான். ஆனா அது ரஜதம் இல்லை. ரஜதம் இல்லாத வஸ்து ரஜதமாக தெரியறதோ இல்லையோ பிரதிபாசத்தை. அதனாலதான் பிரதிபாசத்துல அந்நிதாத்வம்னு சொல்லலாமேன்னு ரெண்டாவது. அதை சொன்னா இது பிரத்யட்சமா தெரியுது, அபரோக்ஷமாக இந்த வஸ்து அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அப்படி தெரிய முடியாது. அப்படி பிரத்யட்சமா தெரியறதுன்னு சொன்னா அப்படி இருந்தாதான் தெரிய முடியும். எது எப்படி இல்லையோ அது அப்படியாக அபரோக்ஷமாக எப்படி பாதிக்க முடியும்? அது முடியாது. அதனால இந்த இது தப்பு. அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றார்? அந்த ரஜதத்துக்கும் இதுக்கும் பேதாபேதத்தை சொல்லிட்டோம்னா, பேதம்னு தெரியும், அபேதமும் தெரியும். அந்நிய வஸ்துன்னு சொல்லலாம். பேதம் இருக்கிறதுனால அந்நியாத்மனாவபாசத்தை சொல்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கலாமே. அது மகா தப்பு, பேதாபேதவாதம். ஏன்னா பேதாபேதவாதம் கொண்டு வந்தேன்னு சொன்னால் அப்ப என்ன ஆகும்னு சொன்னா, பிராந்தி பாத வியவஸ்தை பண்ண முடியாது. இதம் ரஜதம் அப்படிங்கிறது அபேதத்தை வச்சுன்னு சொன்னேன். அபேதம் அங்க இருக்கு, அப்ப அது கரெக்டு. நேதம் ரஜதம்னு ரஜத பேதத்தை சொல்ற, ஏதமும் இருக்கு, நீதான் பேதம் அபேதம் ரெண்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அப்ப இதுவும் சரிதான். அப்ப இது ரெண்டே, ஒண்ணு பிராந்தி, ஒண்ணு அதுக்கு பாதகங்கிற லோக பிரசித்தமான ஒரு வியவஸ்தைக்கு பாதம் ஏற்பட்டுடும். அதனால இது சொல்லப்படாது. மூணாவது, வஸ்துவே பரிணாமத்தை அடைஞ்சு விடுறதுன்னா அப்பவும் பிராந்தி பாதம் வராது. இப்ப க்ஷீரமானது தயிராக பரிணாமத்தை அடைஞ்சு விடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது தயிர் இல்லை அப்படின்னு நமக்கு பாதம் வருமோ? தயிர் தான் அது. அதே சமயத்துல தயிர்னு தெரியறது பிராந்தின்னு சொல்லுவோமோ? அதுவும் இல்லை. அது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு தடவை தயிராயிடுச்சுன்னா அப்புறம் தயிராவே தான் இருக்கும், அது மறுபடியும் பாலாகுது. அதே மாதிரி இந்த சுக்தி ரஜதமா பரிணாமத்தை அடைஞ்சு கொடுத்தோன்னு சொன்னா அப்ப எப்போ பார்த்தாலும் அது ரஜதமாவே இருக்கணும். அதனால இதுவும் சரியா இல்லை. இப்படியாக அந்நிதாட்சியாதிவாதத்தை கண்டனம். ஏதன் மத்தியில இவன் வந்தான், பௌத்தன்.
விஞ்ஞானவாதி. அவன் என்ன சொல்றான்னா, நமக்கு ஞானத்துலதான் ரஜதம் இருக்கு, வெளியில இல்ல. அப்ப இது ஏன் பிரமம் நான் சொல்றேன்னு சொன்னா, வெளியில இருக்கா மாதிரி தெரிஞ்சதோ இல்லையோ, அதனால இது தப்பா போச்சு, இந்த ஞானம் தப்புன்னு அவன் சொல்றான். அதை கண்டிக்கும் போது இவருக்கு சொல்றார், எப்படி இந்த ஞானத்துல ரஜதாகாரம் வந்தது, இது எப்படி ரஜதாகாரம் திடீர்னு எப்படி வந்தது, இதுக்கு முன்னாடி வரலையே அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கு காரணம் அவன் என்ன சொல்றான்னா, இது தாரை, விஞ்ஞான தாரை. இந்த விஞ்ஞான தாரையில ஏதோ ஒரு ஞானம் இதுக்கு முன்னாடி ரஜதாகாரமா வந்திருக்கு, அதனுடைய சம்ஸ்காரம் இப்ப வேலை செஞ்சு இந்த ஞானம் ரஜதாகாரமாக வந்திருக்குன்னு அவன் சொன்னான். அப்ப இதை கண்டிக்கும் போது, அவ்வளவு தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை எப்படி இன்னைக்கு வரக்கூடிய இந்த ரஜத ஞானத்துக்கு காரணம் சொல்லலாம்னா, அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் சொல்றார், நிறைய விவதானம் இருந்தாலும் அது காரணத்துவம் சொல்றது உண்டு. நாம நெல்லை விதைக்கிறோம், இந்த நெல்லுலேருந்து மறுபடியும் அதுல இருந்து அங்குரம் முளைச்சு அது வளர்ந்து அதுல மறுபடியும் இதெல்லாம் பழம் அது பழுத்து திருப்பியும் அதுல இருந்து நெல் வரணும்னு சொன்னா இதன் மத்தியில நிறைய வேலை இருக்கு. அதெல்லாம் பல பரிணாமங்கள் விவதானம் அப்புறம்தான் அந்த நெல்லுல இருந்து பல நெல்லுகள் வரும். நல்ல விதைச்சா நேரடியா அதுல இருந்து நெல் வராது. அதுக்காக விவகிதமா இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த நெல்லு காரணமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? அதே மாதிரி இந்த ஞான சந்ததியில ரொம்ப விவகிதமான ஏதோ ஒரு ரஜத ஜானம் பூர்வம் இருக்கிறதுனாலதான் இப்ப இந்த ரஜதாக்கார ஜானம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அவன் சொன்னான், விஞ்ஞானாக்கார வாதி. அதுக்கு கண்டனம் பண்ற சொல்றார், விஞ்ஞானாக்காரம் ரஜதம்னு சொல்றியே, இந்த ரஜதம் உண்டாகிறதா இல்லையா அப்படின்னா, இல்லை உண்டாகிறது இல்லை, ஞானம் தான் உண்டாகிறதுன்னு சொன்னா, அப்ப உண்டாகக்கூடிய ஞானத்துக்கு உண்டாக ரஜதம் எப்படி ஆகாரம்னு சொல்ல முடியும்? அது சொல்ல முடியாது. சரி, அப்படின்னா ரஜதமும் உண்டாகிறது ஞானமும் உண்டாகிறது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ரஜதம் எதுல இருந்து உண்டாகிறது? ரஜதங்கிற விஷயத்திலேருந்து உண்டாகிறதா, வேற ஏதோ அது ஞானத்தை தவிர்த்து வேற ஒரு காரணம் இருக்கு ரஜதத்தை உண்டாக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றியா? உன் மதத்துல நீ விஞ்ஞானவாதி, ஞான வத்திரிக்தமான ஒரு விஷயமே கிடையாது. இல்ல ஞானத்தினாலேயே தான் இந்த ரஜதம் உண்டாயிருக்குன்னு சொன்னா, எந்த ஞானத்தால உண்டாகும்? ரஜத ஞானத்தால உண்டாகுன்னு சொன்ன. அப்ப ரஜத ஞானத்தினால உண்டான இந்த ரஜதம் அந்த உண்டாக்கக்கூடிய காரணமான ரஜத ஞானத்துக்கே விஷயமா இல்ல வேற ஒரு ஞானத்துக்கு விஷயமான்னு அப்படி விசாரிச்சார். ஏற்கனவே இருந்த ஞானம் இப்போ ரஜதத்தை உண்டாக்கி இருக்குன்னு சொல்றேன். அந்த ஞானம் அதனால உண்டாக்கப்பட்ட ரஜதம் அந்த ஏற்கனவே இந்த ரஜத ஞானத்துக்கு தான், ஜனக ஞானத்துக்கு தான் விஷயம்னு சொல்லிட்டா இப்ப தெரியாது கூட. ஏன்னா ஏற்கனவே இருந்த ஞானம் போயாச்சு. ஆக அதுக்குதான் அந்த ஞானம், அந்த ரஜதம் விஷயமாகுமே தவிர இப்ப தெரியலேன்னு ஆயிடும். அது தப்பு, இப்ப தெரியறது. அப்ப என்ன சொல்லணும்? உண்டாக்குற ஞானம் என்னமோ ஏற்கனவே வந்த ரஜத ஞானம், ஆனா விஷயம் இந்த உண்டாக்கின ரஜதம் எந்த ஞானத்துக்கு விஷயம்னா இப்ப வந்த ஞானத்துக்கு விஷயம். அப்படி சொன்னால் மறுபடியும் கேட்கிறார், துஷ்ட காரண ஜன்யமான ஞானத்துக்கு விஷயமா அதிருஷ்ட காரண ஜன்ய ஞானத்துக்கு விஷயமா? தோஷம் இல்லாத ஒரு ஞானம் வந்திருக்கே அதுக்கு விஷயம்னு சொன்னால் அப்ப பிராந்தி இல்லைன்னு ஆயிடும். ஏன்னா தோஷத்தினால வரக்கூடிய ஞானத்தை தான் நம்ம பிராந்தின்னு சொல்லுவோம். இப்ப அப்படி இல்லைன்னு ஆச்சு. ஆத்தேபி அப்படிங்கிற துஷ்ட காரணத்தினால வரக்கூடிய ஞானத்துக்கு தான் ஜனகம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜனகம்னு சொல்லிட்டியோனும், அப்பனா அது அரசக்கிரியாக்காரின்னு ஆச்சு. அப்ப இந்த ரஜதத்தை நீ சத்தியம்னு ஒத்துண்டாகணும், சத்தியத்துவ பிரசங்க. ஏன்னா உன்னுடைய மதத்துல எது ஒரு காரியத்தை உண்டு பண்ணுமோ அதெல்லாம் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இது ஜனகம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பிரத்யக்ஷ விஷயமாகாது, அது அசத்தாக போயிடும். ஆகையாலே சுத்தியில ரஜதம் அப்படிங்கிற ஞானம் ஏற்கனவே சொன்ன அந்நிதாக்கியாதிவாதத்திலையும் சரிபட்டு வரல, ஆத்மக்கியாதின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஞ்ஞானவாதி சொல்லக்கூடிய வாதத்திலையும் சரிபட்டு வரலே. ஆக இந்த ரெண்டு வாதமும் தவறானது. இதோட